Okay, now we start with theorem of angle between tangent and secant. We can also call this theorem as tangent secant theorem. Okay, याद रखो, we can also call this as tangent secant theorem, tangent secant theorem, और बाद में और एक tangent secant जैसा है, लेकिन उसको हम लोग tangent secant chord theorem कहते हैं. Okay, ये सिर्फ tangent secant theorem कह सकते हैं. Now what is the theorem says? If an angle has its vertex, देखो the angle है ABC is the angle we are discussing, has its vertex on the circle in one point. इसका मतलब this line BC intersects the circle in one and only one point, that is point B. So it's a tangent. Okay, line BC is a tangent, and this diameter, because here it passes through the center of ray BA passes through the center of circle, इसलिए यहाँ diameter. So this ray BA intersects the circle in two distinct points, C, at point A and B. So it's a secant, and that's why tangent secant theorem. So I repeat, if an angle has its vertex on a circle, that is point B, its one side touches the circle in point B and the other intersects the circle in one more point, that is point A, then the measure of an angle, this measure of an angle ABC is half the measure of angle ADC. So ABC is half ADB, ये ABC half ADB यहाँ भी है, और ABC half of ADB यहाँ भी है. तीनों कंडीशंस में टेंजेंट सेकेंट थ्योरम इस्तेमाल होता है. So we have to show the given क्या दिया, देखो, a vertex of angle B lies on a circle with center M. Its side BC touches the circle at B, and side BA intersects circle at A. Arc ADB is intercepted by angle ABC. We have to show angle ABC is half ADB. यहाँ भी three conditions हैं. पहला, ये all the three conditions are based on the center of a circle. Where is the center of circle? If the center of circle lies, there are three possibilities. Center of circle lies on the angle ABC. Second, center of circle lies in the interior of angle, in the exterior of angle ABC. ये second case है. And third, it lies in the interior of angle ABC. Interior of angle ABC. These are the three conditions we have to deal with. So start with case 1. If center M lies on ray BA, that is on one of the arm of the angle ABC, our supposition, then angle ABC is equal to 90 because tangent is always perpendicular to the radius. Tangent theorem. Next, measure arc ADB will be equal to 180 because if AB is the diameter, ADB will be semicircle. So measure of semicircle, uska reason है segment AB is a diameter, and by definition of measure of a semicircle. Now we can see ADB is 90. Half of 90, half of 180 is 90. So we can say angle ABC is half of measure arc ADB from segment number 2 and 3. अब case number 2 देखो. If point A, center M lies in the exterior of angle ABC. So draw AM and BM, या MA and MB, that is our construction. So ये triangle form हो रहा है. These two angles are congruent. These two sides are congruent, because radii of the same circle. So ये जो triangle है AMB becomes an isosceles triangle with two sides are congruent. So angle opposite congruent sides congruent. So what will get? Angle MAB congruent to angle MBA. We call it X. Okay? This is theorem of isosceles triangle theorem. अब ये ट्राइंगल में तीनों एंगल लेते हैं. एंगल दिस एंड एंगल दिस AMB. सो एंगल इन ट्राइंगल AMB, एंगल AMB plus angle MBA plus angle MAB equal to 180 degrees. Sum of pairs of angles of a triangle is 180. सब्स्टिट्यूट करो, ये मेजर एंगल AMB ये हमें फाइंड करना है.
इक्वल टू x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180. सो मेजर एंगल ए एम बी, ये जो है वो 180 माइनस 2x डिग्रीज मिल गया. नाउ वी कम टू एंगल एम बी सी. ये 90 है देखो, बिकॉज टेंजेंट रेडियस थ्योरम. एम बी सी इज 90. हमें क्या फाइंड करना है? ए बी सी. और ये एम बी ए इज एक्स. तो स्टार्ट करो. एम बी सी इज इक्वल टू एम बी ए प्लस एंगल ए बी सी. एंगल एडिशन प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट करो. एम बी सी इज 90. एम बी ए इज एक्स डिग्रीज प्लस ए बी सी फाइंड करना है. सो एंगल ए बी सी विल बी एक्स को इस साइड लेके आओ. सो 90 माइनस एक्स. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट 2 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू, इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2. So 2 times major angle ABC equal to 2 into 90 is 180 minus 2 into x is 2x. अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड से इक्वल, देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी इक्वल. सो वी कैन से 2 मेजर एंगल ABC इक्वल टू मेजर एंगल AMC फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 7 एंड स्टेटमेंट नंबर 9. बट एंगल AMB is nothing but arc ADB. By definition of measure of an arc. और भूलो मत, एंगल AMB is 90. ये सॉरी एंगल AMB is a central angle. और जो भी मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल होता है that will be equal to measure of this minor arc. Hence angle AMB equal to minor arc ADB. Angle AMB equal to measure arc ADB. अब ये इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो. सो इट विल बी 2 मेजर एंगल ABC इक्वल टू, एज इट इज, इंस्टेड ऑफ दिस राइट डाउन मेजर आर्क ADB डिवाइड बाय 2 करो. सो एंगल ABC इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ADB. सेकेंड केस प्रूव. नाउ वी गो टू थर्ड केस. इफ सेंटर M लाइज इन द एक, ये इंटीरियर है. If center M lies in the interior of a circle, अपना supposition है, ये अभी है. Now we can say angle ABE plus angle ABC is equal to 180. Angles in any pair. हमें ABC चाहिए. So angle ABC will be equal to 180 minus ये angle AB उस साइड लेके जाओ. But what is angle ABE? Equal to half major arc AFB. ये corollary of, ये हमने केस 2 का इंस्क्राइब एंगल, जैसे केस 2 प्रूव्ड इन केस 2 करेंगे ना, फ्रॉम केस 2. केस 2 क्यों मालूम है? ये एंगल ABC के एक्सटीरियर में है, एंगल ABE के एक्सटीरियर में है, इसलिए केस 2 से. एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AFB. अब ये जो है ये पार्ट ABE की जो वैल्यू है यहां सब्स्टिट्यूट करो स्टेटमेंट नंबर 14 में. सो एंगल ABC एज इट इज इक्वल टू 180 एज इट इज माइनस, इंस्टेड ऑफ एंगल ABE राइट डाउन हाफ मेजर आर्क AFB. अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 करो. सो वी गेट 2 टाइम्स ABC इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो. सो 180 इंटू 2 इज 360 माइनस 2 इंटू हाफ, 2 चला गया, मेजर आर्क AFB. अब 2 टाइम मेजर एंगल ABC एज इट इज इक्वल टू, व्हाट इज 360 माइनस AFB? देखो ये 360 माइनस AFB इज द थिंग बट ADB. और ये 2 डिवाइड कर दो, तो एंगल ABC इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ADB. प्रूव्ड. ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसके कॉन्सेप्ट आएंगे. अगर आएगा तो छोटा सा एक पार्ट का एक्टिविटी आ जाएगा. ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना. कॉन्सेप्ट
चलो, now go to next theorem. और कुछ छोटे छोटे थियरम्स बाकी हैं, वो फिनिश अप कर देते हैं. कॉन्वर्स ऑफ थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड, अरे वो छोड़ दो, मतलब वो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स, ये थियरम बहुत जरूरी है. तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, दोनों थियरम एक साथ कर लेते हैं. वाह वाह, इंक इंक इंक. See, if you have understood, geometry is not a difficult topic. If you study the first 3 chapters properly, बार बार मैं ये कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि बच्चों को कभी कभी ना, कभी कभी उनका साइकोलॉजिकल बैरियर, ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक होता है कि मैं ये इसको प्रूफ करने समय ये नहीं, जरा करो प्रैक्टिस करो, और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही करो. ये 7, 8, 10 बार होना चाहिए फर्स्ट 3 चैप्टर टोटली परफेक्ट. तो बाकी के चैप्टर अगर 5, 6 बार कर लोगे ना तो भी प्रैक्टिस, मैं आपको बोलता हूँ 90% से 1 मार्क भी कम नहीं आएगा अगर मतलब 7 to 8 टाइम्स पूरे टेक्स्ट बुक कर लोगे. डिफिकल्ट है, बोलने में आसान लगता है 7 to 8 टाइम्स, when you practice it ना becomes difficult. तो इसलिए जैसे भी टीचर ने सिखाया वेकेशन में 2 बार खत्म कर दो या 3 बार, तो बाकी की रिमेनिंग 8 to 9 मंथ्स में अब 3 बार भी हुआ तो नेचुरली 8 टेस्ट होगा, सेमेस्टर होगा, प्रीलिम्स होगा, उसमें होता रहेगा 3-4 बार. चलो, तो सर्कल ढंग से नहीं आया क्योंकि ABCD, this is O, ये E है, सॉरी. So AE into EB. DE.
construction. See, they given us this theorem of internal division. Internal division means these two chords are intersecting each other in point E, and point E is in the internal, inside the circle. So in that case we use this. ये applications आएंगे इसके. So in a circle with center O, chord AB and chord CD intersect each other in point E. टेक्स्ट बुक में ई दिया हुआ है तो मैं भी यहां ई ले रहा हूं. ओके, टू प्रूव उसका कंस्ट्रक्शन दे लो. ड्रॉ सेग AC एंड सेग DB. प्रूफ. इन ट्रायंगल CAE या हम लोग प्रॉपर लेते हैं ACE, इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल. मैंने यहां से शुरू किया है, मतलब यहां से DBE 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. एंगल ACE congruent angle ACE congruent angle DBE. Angles inscribed in same arc are congruent. That is, we can say angle AC चलेगा. ACD is same as ACE, याद रखो. Segment number 2. Angle AEC congruent angle DEB. This is vertically opposite angles. Vertically opposite angle. Segment number 3. Therefore, triangle ACE, similar triangle DEBE, AA test of similarity. Fourth, therefore, AE upon ED या DE इक्वल टू, तुम्हें CE चाहिए और ये, सो CE upon BE या EB. Corresponding sides of similar triangles, that is AE into EB C into ED. Hence proved. बहुत आसान प्रूफ है ये. We go to the next external division of two chords. Theorem of external division of two chords.
उसकी पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो ये सीकेंड ही है, लेकिन हम लोग इसको कॉर्ड लेते हैं, ये कॉर्ड बढ़ गया और कुछ नहीं। ए बी सी डी intersect each other externally in point E. Chord AB and chord CD intersect each other in ये अपना जीवन है टू प्रूव। यही प्रूव है। AE इंटू EB इक्वल टू CE इंटू ED। सेम प्रूफ, सिर्फ एक्सटर्नल डिवीजन। कंस्ट्रक्शन, यहां क्या कंस्ट्रक्शन हमें लिया था? अच्छा, हमने AC ड्रॉ किया था, यहां AC नहीं, यहां AD है और ये BC। प्रूफ। Now we take triangle AED and CED. देखो, in triangle AED and triangle CED, these two angles are congruent because angles inscribed in the same arc. Angle EAD congruent to angle ECB. मैं क्या कर रहा हूं? Angles inscribed in same arc are congruent. Statement number 2. Angle AED congruent angle CEB. Common angle. Therefore, triangle AED, similar triangle CEB, AA test of similarity. Fourth. Therefore, AE पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं। See, in this triangle AED and triangle CEB, angle EAD common to angle ECB. Both angles are inscribed in same arc, or we can say they intercept same arc. दोनों में से कोई भी inscribe angle theorem. Angle AED common to angle CEB, ये common angle है।
This is a common angle. Therefore, these two triangle AED, similar triangle CEB by angle test of similarity. अभी 1-1 correspondence लो, हमें AE चाहिए, AE 1 and 2, और ये CE equal to हमें 2 and 3 और ये 2 and 3. So ED upon EB, corresponding sides of similar triangles. Therefore, we get AE into EB, CE into ED. एक थ्योरम और बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर्स के सब थ्योरम हमने कवर कर लिए, एक एक्सरसाइज बाकी है, एंड देन विल स्टार्ट प्रॉब्लम सेट. ब्लैक हो गया. Okay, now we start with the last theorem. वो है tangent secant segment theorem. We have seen tangent secant theorem. अभी हम लोग जाते हैं tangent secant, मतलब tangent दिया हुआ, secant दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ segments का रेशियो लेंगे. वो हाफ एंगल का वैल्यू था, हाफ and measure of angle is equal to half of intercepted arc, लेकिन यहाँ intercepted arc नहीं, यहाँ length of a segment है, इसलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, बाद में गिवन लिखते हैं. एक टेंजेंट और एक सीकेंट. पहले सीकेंट ड्रॉ कर लेते हैं. AB and T. A, ये B, ये T और ये E. हमें इसको ज्वाइन करना है. Given a circle with center O, secant AB and
एल लेते हैं, टेंजेंट एल इंटर टेंजेंट ईटी intersect each other in point E to prove ये है construction draw sec AT and sec BT. अभी हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं, याद रखो। ये है पहला ट्राइंगल आपका EAT, एंड दूसरा ट्राइंगल है वापस बड़ा, द बिगर ट्राइंगल। हमने ई से स्टार्ट किया तो ई ये कॉमन एंगल होगा, इसके बाद ये जो एंगल है ध्यान दो, एंगल AT या ETB, ये AT इज ऑल्सो टेंजेंट, तो ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से होगा। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बोथ आर इंटरसेप्टिंग सेम आर्क AT। सो मैंने लिया EAT, तो स्टार्ट होगा ETB, ETB, ये ETB मतलब कॉमन अनकॉमन 90, ये कॉमन अनकॉमन 90, ऐसा है 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ये स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट सॉरी कंटिन्यू करो। देयरफॉर एंगल ETA कॉन्ग्रुएंट, जो मैंने मार्क किया है डबल मार्क किया, ETA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBT, ETA 132 टेंजेंट सीकेंट। कुछ लोग टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम बोलते हैं, आप जैसे, ये इतना भी चलेगा, फुल मार्क्स है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। एंगल छोटे के लिए AET 213, यहां भी 213, एंगल TEB कॉमन एंगल। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल EAT सिमिलर ट्राइंगल ETB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। फोर्थ, therefore 1-1 correspondence लो, ET EB, देखो ET और EB है, सो ET अपॉन EB, EA अपॉन ET, corresponding sides of similar triangles, that is क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ET स्क्वायर इक्वल टू EA इंटू EB, ये हो गया अपना टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। वापस लिख रहा हूं, देखो इन ट्रायंगल EAT ये कॉमन एंगल है, ये अनकॉमन, और ये डबल लाइन का टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां कॉमन एंगल
ये ई टी बी अनकॉमन है और ये कॉमन एंगल, वैसे वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस आपको देना है. With that we complete all the theorems of this. Practice set 3.5 will start. You have to find PS and RS. Find PS and second R. PS and RS. Okay, पहला solution चालू करते हैं. PS into PR equal to PQ square. इसका रीजन है टेंजेंट सीकेंट segment theorem. Therefore, PS into 8 is 12 square. So PS is equal to 144 upon 8. 8 ones are 8. 8 8s are 64. Therefore, we get PS equal to 18 units. Now they ask us to find RS. PS is equal to PR plus RS. Reason P dash R dash सब्स्टिट्यूट करो. PS अभी हमने फाइंड किया 18 equal to 8 plus RS. Therefore RS will be 18 minus 8, 10 units. अब आते हैं यहां सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. देखो क्या दिया उन्होंने. RD is 15, DS is 4, MD is 8 and DN you find. So theorem of intersection of two chords. Should interior दिया या what theorem they say? External. Theorem of internal division. Yes. Theorem of internal division of two chords. मार्क करते हैं. MD into DN equal to RD into DS. Theorem on internal division of two chords. Substitute value MD कितना है? 8. DN we have to find out. RD is 15. DS is 4. Therefore, DN is equal to 15 into 4 upon 8. So, DN will be 7.5 units. 4 ones are 4, 4 twos are 8, नीचे 2 आएगा. 15 divided by 2 is 7.5 units. Second, total RS is given to you and you have to find DS. So, let TS equal to X units. Therefore, what will be RS? RS will be RD plus RS, R dash, D dash 8. RS is 18. And DS we have taken as
RD plus DS, sorry, RD plus DS है वो. Therefore, RS is 18 equal to RD plus X. So RD will be 18 minus X units. Now next, therefore, internal division of two chords, same. MD into DN equal to RD into DS. Theorem on internal division of two chords. Substitute करो. MD is 9, DN is 8. So 9 into 8. RD is and DX दिया है. So 18 minus X into X. Open करो. 72 equal to 18x minus x square. सेट लेके आओ. अरे बाबा. 18x minus x square. So we get x square minus 18x plus 72 equal to 0. I thought I will be able to do it. No. Factorize करो. 8 9 जा 9 8 जा 72. ये हमने किया है अलजेब्रा में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x 8x plus 72 equal to 0. इसको कॉमन निकालो. x minus 9 इसमें कॉमन निकालो. इसमें कॉमन और इसमें कॉमन. x ये माइनस है बाहर. So inside the sign will change. देखो, this bracket has to be same. अगर ये bracket same है, then we are right. Therefore, x minus 9, x minus 8 equal to 0. Therefore, x is equal to 9 or, sorry, घाई नहीं. Therefore, x minus 9 equal to 0 or x minus 8 equal to 0. Therefore, x equal to 9 or x is equal to 8. Therefore, क्या उन्होंने पुला है? अपने को फाइंड करना है ds. हमने ds को क्या लिया है? Let ds as x. ये को लिया है हमने. Therefore, ds equal to 9 units or ds equal to 8 units. Question number 3. AB is 12, AC is 8. ये 12 है, ये 8 है. Given refer textbook, find. For given refer textbook, you have to find first AD, then you have to find DC, and third you have to find DE. Let us start. First, AB is a tangent and AD is
secant, so tangent secant theorem. Therefore, AB square equal to AC into AD. Tangent secant theorem. So what is AB? 12 square 8 into 80. 144 equal to 8 into 80. Therefore, AD कितना आएगा? 144 divided by 8. So, AD will be 8 1 8, 8, 8 is 64 units. We got AD. Now we want to find DC. AD is nothing but AC plus DC. So DC मिल सकता है. AD minus AC is DC. So therefore AD equal to AC plus DC. A dash C dash D. Therefore AD is 18 equal to AC is 8 plus DC. Therefore DC is equal to 10 units. Step का ही question है. Similar question, only thing is little bit changes. Third, तो DC मिल गया अभी D. Now you know, 9th में हमने एक theorem किया था circles में. Perpendicular from the center of circle to the chord bisect the chord. ये chord है DC, वो bisect हो जाता है. Now DE equal to half DC. Reason? Perpendicular drawn from center of circle to the chord bisects the chord. Therefore, DE half into 10 5 units. So we completed 3 questions. Of 3.5. इरेज करते हैं अभी. Okay, we'll start with the 4th question. Circle Rocco. External division of 2 chords. QR is given to you as 10th. PS is 8. PQ is 6. Find this is theorem on external division of 2 chords. PT into PS equal to
पी क्यू इंटू पी आर, अरे उसके पहले हफ्ते को पी आर फाइंड करना पड़ेगा। पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू पी। आर क्यू इज पी क्यू इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, पी डैश क्यू डैश आर। Therefore, PR equal to PQ कितना है 6 plus 10. So PR equal to 16 units. Now we go to that external division of two chords. PT into PS, PQ into PR. PT पूरा, PS छोटा, PQ PR इंटू PQ, मतलब बड़ा इंटू छोटा, बड़ा इंटू छोटा, ऐसे। थियरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स। PT हमें फाइंड करना है, PS इज 8, PQ इज 6 और ये 16। सो PT विल बी 6 इंटू 16 अपॉन 8, देखो 8 2 जा, सो PT विल बी 6 इंटू 2, PT इक्वल टू 12 यूनिट्स। PT मिल गया। थर्ड, वी वांट TS। Now PT equal to PS plus TS, P dash S dash T. PT is 12, PS is 8 plus TS. Therefore TS is equal to 4 units. 12 minus 8. We complete question number 4. Now we have to go to question number 5. Question number 5. ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.5 का। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सेट ऑफ third chapter, that is circles. EF is a diameter. ये रेडियस है यार। अच्छा ये H है, H as a center of a circle and D, okay, ये 90 है, बोलने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड रकस टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। चलो क्वेश्चन 5 गिवन, refer text to prove that, to prove लिखते हैं DE into GE equal to 4R square. DE into
G is equal to 4 square. We'll start with proof. Very important question. First, see, this is a tangent, DF is a tangent, DE is a secant, so use tangent secant theorem. Therefore, DF square equal to DE into DG. Tangent secant theorem. Statement number 2. बस यहाँ और इसमें सिर्फ ये जी और ये डी जी है, बाद में देखेंगे ना. यूज पाइथागोरस. उसके अच्छा एक स्टेटमेंट ए गया घाई, दे आर नॉट गिवन दिस 90 ना, तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. उसके बाद सेट डी एफ परपेंडिकुलर diameter EF. The reason is tangent theorem. Therefore, in triangle काफी है. और ये लो, what is EF? EF is 2 into radius given EF as diameter. Therefore, EF is 2 into R. Now statement number 3. In triangle DFE, measure angle DFE equal to 90 degrees from statement number 1. देखो DF is perpendicular to EF, so ये 90 हो गया. So use Pythagoras here. Therefore, DE square equal to DF square plus EF square. Pythagoras theorem. Statement number 5. Therefore, DE, we want EF. चलो. Therefore, EF square equal to DE. DF इस साइड लेके आओ. DE square minus DF square from statement 4. नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है. Now statement 5 यहाँ लिखो. Therefore, what is EF? EF is 2R the whole square equal to DE. हम जो यहाँ दिया है वैसे जाएंगे. D इस साइड है तो इस साइड लेने दो. Therefore, DE square minus DF square equal to EF square from above. DF इस साइड लेके आए. Statement number 5. Therefore, DE square as it is इसको रहने दो. Now go to statement number 5. Here DF square is equal to DE into DG. Tangent secant segment theorem. Because ये tangent है, because perpendicular diameter tangent, और ये secant है. Now substitute this value here.
Therefore DE स्क्वायर, ये DE स्क्वायर माइनस DF के बदले ये लिखो DE इंटू DG एंड EF के बदले 2R तो होल स्क्वायर। कॉमन निकालो इसमें, DE इज कॉमन, तो इनसाइड ब्रैकेट क्या होगा DE माइनस DG। देखो DE कॉमन निकल गया ना इसमें से और इसमें से, तो इसमें से एक DE बचा और ये माइनस DG इक्वल टू 4R स्क्वायर। सो DE इंटू what is DE minus DG? It is GE. Equal to 4R square. Reason D dash E and bus. With that we complete exercise. We have practiced it. 3.5 बहुत आसान है। देखो DF इज परपेंडिकुलर डायमीटर बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, ये टेंजेंट है और ये रेडियस डायमीटर है। सो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर रेडियस, सो रेडियस से परपेंडिकुलर मतलब डायमीटर से ही परपेंडिकुलर। नाउ EF इज इक्वल टू 2 times R, EF इज डायमीटर। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम इन DFE बिकॉज DFE इज 90 फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। तो पाइथागोरस का क्या होगा DE स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। मुझे EF राइट हैंड साइड चाहिए बिकॉज EF इज 2R, तो वो चाहिए मुझे राइट हैंड साइड। सो DF को इस साइड लेके आओ, देयरफॉर DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर। बस यहाँ रुको। Now this is tangent, this is secant, use tangent secant segment theorem। DF square equal to DE into DG, tangent secant segment theorem। Substitute this value here इसमें अंदर। So DE square as it is minus as it is DF square के बदले ये लिखो DE into DG equal to EF के बदले 2R square। अब इसको इन दोनों में से कॉमन क्या है, DE कॉमन है, बाहर निकलो तो इसका एक DE बचा अंदर माइनस ये DE बाहर गया तो DG अंदर बचा इक्वल टू R square will be 4R square। DE as it is DE minus DG, DE minus DG is GE, लिख दिया है ना, इक्वल टू 4R square। With that complete।